Hello and welcome to Solid Learning, guys. Today we are going to write a program to find greatest of three numbers entered by user. तो यार हमको सबसे पहले तीन numbers input लेने हैं user से. Let's say मैं A, B और C input ले रही हूँ and first will be A and we'll write int input. As we are going to find greatest of all the three numbers, तो हमको integer as an input लेना होगा. तो let's say enter a number. तो ये हम फर्स्ट नंबर इनपुट ले रहे हैं. ओके एंड ऐसे ही हम दो और इनपुट्स ले लेंगे. लेट्स से बी एंड वील राइट इंट इनपुट एंड एंटर अनदर नंबर एंड सेम तरीके से हम एक और इनपुट ले लेंगे. ठीक है. एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है दैट इज़ मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन टेक्स द आर्ग्यूमेंट्स एज एन आप कोई भी नंबर्स इंटीजर्स डालते हैं जिसको आपको कंपेयर करना है. एटलीस्ट टू नंबर्स तो हम डालते ही हैं जिसको हमको कंपेयर करना होता है. ठीक है. तो वो क्या करता है, वो दो या तीन जितने भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसमें से वो लेता है, उनको कंपेयर करता है एंड उनका जो मैक्सिमम होता है वो फाइंड करके देता है. तो आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट मैक्स एंड मैक्स किसके बीच में फाइंड करना है हमको, ए बी एंड सी. This will give us the maximum of three numbers. Let's just run once and it's asking me first number, let's say 4, second number 3, 5 and the number should be 5. That's the answer. You can just format your print statement that maximum of 3 is like this or something like that. This was all about the maximum of three numbers entered by user. Thank you for